जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं फॉर अ स्पेशल शो मेजर जनरल राजीव नारायणन, जो एक बड़ा ही डेंजरस सवाल का जवाब देंगे आज। क्या वर्ल्ड वॉर 3 पास है? और यूएसए का जो प्लान चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि 2-3 स्टेटमेंट्स भी आए हैं वहां से, वो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे एंड के अंदर। बट ये वर्ल्ड वॉर 3 का क्या गेम होने वाला है? पूरी दुनिया एक जगह पे खड़ी हुई है एंड वी कैन सी आवरसेल्व्स इंचिंग इनटू वॉर। सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट क्या होने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले सर को वेलकम करते हैं एंड सर से पहले तो आशीर्वाद देते हैं फॉर कंप्लीटिंग 175,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड सर फॉर द गाइडेंस एंड हेल्प सर। Thank you, thank you. Namaskar, Jai Bharatam. Yes, great news. I got yesterday 1,75,000 crossed, and may you go from strength to strength. थैंक यू सर। अब हम लोग कई बार ना वर्ल्ड वॉर 3, कोल्ड वॉर 2.0 ये इवन वेस्टर्न ऑथर्स यूज करते हैं वेरी लूजली, और हमारे बंदे भी उसके फिर वो कथन जो होता है वो प्रचलित हो जाता है कि वर्ल्ड वॉर 3 2.0 वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि यार जब हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं मतलब क्या है उसका, और दो जो वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं उनका उदाहरण देता हूँ कि उनको हम क्यों कहते हैं वर्ल्ड वॉर। उसके बाद फिर लेंगे कॉन्सेप्ट्स जो आते हैं कि ये यहाँ पे लड़ाइयाँ क्यों होती हैं इस वर्ल्ड आइलैंड, उधर से आगे लेके चलेंगे टॉक। तो सबसे पहले क्या होता है वर्ल्ड वॉर का, क्या मतलब होता है कि द वर्ल्ड आइलैंड, इसमें जो आउटलायर्स है ना, अमेरिकाज, दे डोंट कम इनटू प्ले एंड द वर्ल्ड आइलैंड कम्स इनटू प्ले। एंड उसमें भी जो आगे कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे, मच ऑफ अफ्रीका इज मिसिंग इन दैट, विच इज अ बिग सरप्राइज। But much of the world island gets affected directly or indirectly. And the many nations and Purane Zamane ke colonies get involved in it. It has nothing to do with where the battle is going on. Battle can be going on anywhere. But if much of the world island and with men, material, and other things get involved in that fighting, then it's a world war. जी, ओके, इन्वॉल्वमेंट हो गया, मतलब सबका एक साथ Involvement, घुस गए हैं। हाँ yes. जी। Then it's a world war. जी जी। क्योंकि आप इन्वॉल्व हो रहे हो लड़ाई में, मेन हम्म। मटेरियल सब जा रहा है आपका, और ये आपके वर्ल्ड आइलैंड के इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। हम्म। आउटलायर्स के ऊपर उतना इफेक्ट पहले होता नहीं था, आजकल होगा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंटरडिपेंडेंसी आ गया। हम्म। अगर वर्ल्ड वॉर 1 देखें, मोस्ट ऑफ इट वाज फॉट इन यूरोप, देन देयर वाज वेस्ट एशिया, क्योंकि सेंट्रल पावर्स वर्सेस एलाइज। सेंट्रल पावर्स वर द जर्मन एम्पायर, द ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर, the आपके बल्गेरिया एंड द ऑटोमन एम्पायर। दीज वर दी सेंट्रल पावर्स, क्योंकि वो सेंट्रलिटी था। रशिया एक साइड में था एंड वेस्टर्न यूरोप दूसरे साइड में था। दे फॉर्म्ड द मिडिल पोर्शन ऑफ सेंट्रल यूरोप स्ट्रेचिंग इनटू एशिया, बिकॉज ऑटोमन एम्पायर वाज इन्वॉल्व्ड। सो वेस्ट एशिया में लड़ाई हुई थी। Then there were certain parts of Africa where the German colony was there, or the Austro-Hungarian colony was there. उस पे हुआ था। Similarly, Pacific में German colonies were there in the southern Pacific, वहाँ पे अटैक हुआ था। But bulk of the लड़ाई was, one portion was Europe where the maximum took place, the other was West Asia, जी। लॉरेंस ऑफ ऑटोमन। अरेबिया, सब सुना होगा हम्म। नाम। जी। ठीक है, अगेंस्ट द ऑटोमन्स। बट हुआ क्या था, manpower, men, and material came from virtually the entire globe. All colonies were involved. And जी। after the sinking of Lusitania in 1917, allegedly by the Germans, a lot of people say that it was the British Navy which sank it along on orders of Churchill. But what has come out more is that it was the Germans which sank the passenger ship Lusitania in 1917. The Americans joined in.
तो Americans also gave their men and material. Okay, so it impacted the world island. उनकी पूरे सब economy destroy हो गई. हम्म, And like I have said earlier also, it led to the Kindleberger trap. क्योंकि उन्होंने किया कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, so they created a League of Nations. हालांकि US was involved in all the discussions and formulating the articles and the charter for the League of Nations, but they were not signatory to it. And they were the only economy which could sustain anybody. बाकी सबकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी लड़ाई के बाद. कितने जी मिलियंस एंड मिलियंस मरे थे. हमारे यहाँ पे भी फैमिन वगैरह हो चुका था बिकॉज ऑल द राशंस went यूरोप जा off रहे to Europe for fighting. Okay. So, and it became a trap for the Americans themselves because there was no market. So you went into a Great Depression. Similarly, when you look at World War II, most of it was fought either in the Europe or in the Asia Pacific domain. Some battles हम्म, were fought in around the Mediterranean and in West Asia, नॉर्थ अफ्रीका वेस्ट एशिया North Africa, West Asia. Some battles were fought. That's about all. But again, colonies were still there. Men and material came from everywhere. हम्म, हम्म, So most areas of your world island again got impacted. जी That's why it is termed as a world war. And what happened led to the rise of USA. And this करेक्ट time the Kindleberger draft didn't take place because the USA formulated all the UN was placed, otherwise the League of Nations were placed in Switzerland. उसको जगह को बोलते हैं Palais des Nations, Palace of Nations, because it हम्म, was the League of Nations का headquarters. But now the UN and all everything came into the US, the only country after the Second World War also which could look after the global economy. जी And they created all the financial institutions. They provided funds for the development of Western Europe and recreating and rebuilding their Asian markets also, like Japan, South Korea, and all these were given. And of course, they had also given subsequently to the Chinese. जी Okay. Now, because of this and because of the US presence all over the world island, they came to dominate this world island. And when we talk of Cold War 1.0, that is basically the US and their allies versus Soviet Union and their allies, and the two were not interlinked in any which way. हम्म, Globalization तो था ही नहीं. Now, when we are talking about this, let us look at the maps on Mackinder's Heartland theory, and this is the map of Europe. So यहीं पे लड़ाई हुई थी अपने. सारी लड़ाइयां या तो यूरोप और एशिया पैसिफिक, लेकिन पूरा संसार, वर्चुअली वर्ल्ड आइलैंड पूरा आ गया था. आउटलायर्स हैं अमेरिकाज. इनफैक्ट बोथ स्पाइकमैन एंड मैकिंडर केस में अफ्रीका ऑल्सो इज एन आउटलायर, which is a surprise because in today's day and age, Africa has the maximum resources available as a continent, which is being exploited. Shall we go to जी the next slide? Yeah. Now, अभी जो हार्टलैंड, मैकिंडर ने, हार्फोल्ड मैकिंडर ने कॉइन किया था ये 1903, फिर 1914 और फिर 1943. तो 40 हार्टलैंड इज व्हाट इज देयर इन रेड, लैंड पावर. Why? Because that is the area which he felt and which is known to have the maximum resources, which is today's Russia, bulk of today's Russia. All whole lot of natural resources, minerals that are needed are available there. सब कुछ है उसके पास So the aim was whoever controls the heartland controls the world island. That is the concept. But the Americans came with Alfred Thayer Mahan's concept in the 19th century, preceding his, of sea power, because they are an outlier. If they have to control the world island where the bulk of the world lives, जब तक वो
पानी के ऊपर कब्जा करके नहीं रखेंगे, सी पावर नहीं होगा, तो वो वर्ल्ड आइलैंड पहुंचेगा कैसे? जब तो 11-11 एयरक्राफ्ट कैरियर लेके घूम रहा है, ऐसे ही थोड़ी घूम रहा है। उसने 3 जो बड़े ओशंस हैं, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और नाउ इंडियन ओशन जो इमर्ज हो रहा है, उसके ऊपर उसने अपना कंट्रोल जमा के रखना है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह नहीं है, कैसे करेगा? बाकी छोटे नेशंस को अगर सी को कंट्रोल भी करना है, उसको एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती, एयरक्राफ्ट कैरियर की, क्योंकि लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट भी काफी इलाके में डोमिनेट कर सकता है। लेकिन अगर पूरे का ओशन डोमिनेट करना है अपने जगह से निकल के, तो बगैर एयरक्राफ्ट कैरियर के आपको एयर कवर नहीं मिलेगा। तो ये तो था अपना जो अभी ब्लू में रिमलैंड है। ये स्पाइकमैन ने यूएस के येल का प्रोफेसर था, 43 में कॉइन किया था, पास्ट अवे 44 में वो पब्लिश हुआ था। जो इसका ये रिमलैंड बता रहा है, वो मैकिंडर ने इनर क्रेसेंट बोला था, ठीक है। और ये जो अफ्रीका और ये सारे दिखाए हुए हैं, दीज आर आउटर क्रेसेंट और आउटलाइंग आइलैंड्स। और स्पाइकमैन का ये था कि अगर हार्टलैंड जो लैंड पावर है उसको कंटेन करना है, रिमलैंड आपके पास होना चाहिए। रिमलैंड और सी पावर अगर ये दोनों आपके पास हैं, तो आप उस हार्टलैंड को कंटेन कर लोगे, वो कंट्रोल कर सकते पावर हो। भेज सकता। तो अगर अब वहां पे पावर है, अगर उसको बाहर निकलना है, उसने रिमलैंड में ही तो आना है। जी। ओके, तो नाउ वी विल लुक एट पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो कोल्ड वॉर हुआ था, क्या हुआ था। रिमलैंड के वेस्टर्न साइड में यू आर एबल टू कंटेन सोवियत यूनियन, नेटो वर्सेस वॉर्सो पैक्ट। जर्मनी और में बाकी जिसका या तो वो उधर रोक दिया, वहां पे खड़े हो गए। बाकी जगह था जहां पे जंग छिड़ी हुई थी, स्मॉल स्मॉल वॉर्स। हालांकि यूरोप वाज डिवाइडेड बट दे वर स्टेबल, राइट। नाउ यू कम टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट साइड, वहीं पे सारा स्यापा होता था, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। Each side wanted to overthrow the existing government and get their own person in place, and kinetic power was utilized. You look at Africa, though they have kept it outside, there were all whole lot of resources available out there. सामान तो अगर सारा अफ्रीका से आ रहा है। which is the surprising part ना, they don't want anybody to look at Africa, इसीलिए ये बनाया हुआ है। अगर अफ्रीका में कुछ नहीं था तो कॉलोनाइज क्यों किया? ना वही बोलते हैं ना, एवरीबडी द वेस्टर्नर्स हैड द बाइबल एंड अफ्रीकन्स हैड द ज्वेल्स एंड द डायमंड्स एंड द गोल्ड। टुडे द या वेस्टर्नर्स हैव द गोल्ड एंड द अफ्रीकन्स हैव द बाइबल। बाइबल वही था। तो वहां गए क्यों? Because of the wealth of natural resources available out there. जी जी। वहां पे भी आप देखो, जो अमेरिकन कहते हैं स्मॉल वॉर्स, ऑल वॉज हम्म। टू गेन कंट्रोल। लुक एट व्हाट हैपेंड इन लैटिन अमेरिका थ्रू दिस पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, एंड करेक्ट। इट वाज ऑल either Soviet sponsored or the American sponsored, and you had two factions fighting for each other. जी। तो क्या हुआ throughout this time? Did anyone call it World War 3? नहीं। Why not? Global South, which had 150 countries, was impacted by this. हम्म। Virtually the entire Global South was impacted by this. जी। Only because the Global North was not affected. Both your world wars, the Global North was affected. Here the Global North was not affected, so they didn't bring it. लेके ही नहीं आए कि ये भैया वर्ल्ड वॉर है। अमेरिकन कॉल्ड इट स्मॉल वॉर। ओ बकवास यार। bulk of your world population was impacted by this, and they had इमेजिन। छोटा छोटा लड़ाई भी, अपने साउथ एशिया में भी लड़ाई हुई है। इंडो चाइना में कितने साल लड़ाई चली है। जी। एक्सक्लूडिंग सेंट्रल एशिया,
Virtually almost rest of Asia, almost whole of Asia was impacted. Whole of Africa was impacted. Whole of Latin America was impacted. In what manner this is not a world war? नहीं, वो अभी है ना। बोलने को तैयार हो रहे हैं, अभी बोलने को तैयार हो रहे हैं क्योंकि यूरोप इज गेटिंग अफेक्टेड. हाँ, वो जयशंकर जी का कमेंट है ना, यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। तो आपका एकदम एकदम सेट बैठ रहा है वहां पर। बिल्कुल यार. जी यू हैड एन ऑन गोइंग वर्ल्ड वॉर. वर्ल्ड वॉर ऐसा थोड़ी कि तुम बड़ी जंग लड़ने कर दो, एयरफोर्स कर दो. एयरफोर्स एंड एवरीथिंग वाज बीइंग यूज्ड. लुक एट जी लाओस, वन ऑफ द मोस्ट heavily bombed countries ever in history of the world. जी इतने बॉम्ब्स गिरे, इतने वहां पे अपना केमिकल वेपन्स यूज हुआ है, डिफॉरेस्टेशन ये सब करने के लिए. एजेंट ऑरेंज। या and yet we are not ready, even our people are not ready to call it a world war. तो वर्ल्ड वॉर The 3 world आपके war हिसाब में हो चुकी है ऑलरेडी? already, that was World War 3. और नहीं तो क्या है यार. ऑसम। तो ये भी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 4। 4 है. एंड पीपल टॉक ऑफ कोल्ड वॉर 2.0. बाप रे। छोटा सा वो भी टच कर दूंगा. अभी क्या जी है, अभी क्या हुआ है. अभी लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ योर्स. किधर किधर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई ये सब तरफ. इवन बिफोर द यूक्रेन वॉर एड स्टार्टेड, ये सारे एरिया पे तो इंसर्जेंसी, स्टेट, सिविल वॉर, ड्रग वॉर, ये सारे चल रहे हैं. अब इसके ऊपर आपके ऊपर आ जाता है यूक्रेन की लड़ाई हो गई है, वेयर वर्चुअली द होल ऑफ यूरोप इज इन्वॉल्व. जी वेपन्स भी जा रहे हैं एंड विंक विंक मैन भी जा रहे हैं. वेपन्स, मटेरियल, मैन भी जा रहे हैं. हाँ बिल्कुल. क्योंकि ओपनली शुरू में तो कह ही दिया था 2022 में जब लड़ाई छिड़ी थी कि भाग गए सारे यूक्रेन से. तो बंदे कहां से आ गए जो भाग गए? तो ऑब्वियसली यूरोप इज सप्लाइंग. So Europe is जी supplying, and that is why, because and Europe's economy is affected. Europe has got involved in this war so deeply. That is why they are now talking कि World War 3 हो गया. उसके पहले के यार ग्लोबल साउथ था, डेड स्लेव्स थे, तो फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता. गाजा में जो लड़ाई शुरू हुआ है, अनफॉर्चुनेटली डिडंट कॉन्फ्लैग्रेट टू द होल ऑफ वेस्ट एशिया. हाँ। उम्मीद तो थी, चाइना को भी उम्मीद था, हम्म। सबको उम्मीद था. क्यों? क्योंकि हिजबुल्ला भी तैयार खड़ा था, और ईरान का जो कुद्स डिवीजन था वो भी तैयार खड़ा था इराक में घुसने के लिए. लेकिन जो हमास ने हरकत कर दी उसके बाद जा नहीं पाए. जी तो वो उतना बड़ा कॉन्फ्लैग्रेशन हुआ नहीं. अभी आप देखो यूएस इल्ली कर रहा है ऑन द ईस्टर्न फ्लैंक. उंगली कर रहा है लिटरली चाइना को कि लड़ जाए, भारत से लड़ जाए, ताइवान किसी के से भी। साथ लड़ जाए, फिलीपीन से लड़ वियतनाम। जाए, किसी से भी लड़े. हाँ, किसी से भी लड़ाई हो जाए उसकी. हम्म। ओके. उसकी उम्मीद ज्यादा है कि भारत के साथ लड़ाई हो. दूसरी उम्मीद है ताइवान के साथ लड़ाई हो. फिलीपींस और ये वियतनाम से उसको उतना कुछ नहीं. ओके. तो प्रॉब्लम क्या आता है, इसको लोग बोलते हैं आर वी हेडिंग टू वर्ल्ड वॉर 3. जी जो आपने पहले मैप दिखाया था जहां पे इंसर्जेंसी भी है, सारा कुछ चल रहा है, ये वर्ल्ड वॉर नहीं है तो क्या है यार? ये वर्ल्ड वॉर 3 तो कभी खत्म ही नहीं हुआ था, उस पर ऐड ऑन है. जो तो भी एक अमेरिका थ्रू दी 90s एंड 2000s में भी उनके आर्म्ड फोर्सेस जनरल में पढ़ो, कभी भी गूगल टाइप करना यूएसए स्मॉल वॉर्स, दिस इज व्हाट दे कॉल ए स्मॉल वॉर्स. जो लड़ाइयां चल रही हैं, फॉर देम दे टर्म इट एज स्मॉल वॉर्स. आपके लिए स्मॉल होगा, आप सुपर पावर हो, लेकिन उस देश के लिए तो जंग है यार. लुक एट द पीपल, हाउ मेनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल टुडे आर डिस्प्लेस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. यमन जी में कोई कब डिस्प्लेस हुए हैं? हम्म।
आप देख लो सब तरफ कितने डिस्प्ले, सूडान देख लो, सूडान में लड़ाई चल रही है बिटवीन दैट रैपिड सपोर्ट फोर्स एंड द सुदानीस आर्मी। कोई सुदीनी आर्मी। न्यूज़पेपर कवर नहीं करता उसको, ना कोई न्यूज़ चैनल कवर करता। क्यों से एथियोपिया में टिग्रे रीजन में इतनी या जबरदस्त लड़ाई चल रही है। लड़ाई चल रही है, कोई कवर नहीं कर रहा, यहाँ बिकॉज पर कैस्पियन सी के पास पास लड़ने को बैठे हैं, वहां पर वो सर्बिया, कोसोवो और ये दूसरे क्या, अर्मेनिया, अजरबैजान, लिटरली रोज खड़े हो जाते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान, मतलब अब आर्मेनिया अजरबैजान तो अभी थम गया है, सर्बिया में कब फूटेगा पता नहीं, यहां तो फूट चुका, चल रहा है यार, जी। चल रहा है। अभी तो लेटेस्ट हूती का थ्रेट है कि दे विल आल्सो टारगेट शिप्स कमिंग फ्रॉम साउथ ऑफ केप ऑफ गुड होप। अच्छा, वहां से भी? ये मैंने नहीं हाँ, पता। ये तो ओए होए। लेटेस्ट है, उनका थ्रेट आया हुआ दो। फिर मैंने अब करेक्ट कितना लिखा है कर वहां पर सकते हैं वॉर। कितना कर सकते हैं पता नहीं, बिकॉज द मैक्सिमम रेंज जो इरानियंस ने दिया है अबाउट 2000 किलोमीटर्स, तो वो रीच है नहीं अनलेस दे कम डाउन इनसाइड। 2200 के मिसाइल्स हैं उनके पास, बाय द वे। ठीक मैंने है। वहां पर वॉर करेक्ट लिखा है फिर। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एज फार एज द यूएस इज कंसर्न, बढ़िया है यार, द वर्ल्ड आइलैंड इज इन फ्लेम्स and the military industrial complex will go happily. But there are two major disruptors here. अच्छा। Two major disruptors here. The first is the PRC. So let us look at their concept of the Middle Kingdom. चलिए उस पे चलते हैं सर, 1 सेकेंड। Yeah, yeah. मतलब क्या? वो मिडिल किंगडम वो कह रहे हैं, उनके लेक्सिकन में है, जो पुराने जमाने से लेके आया। उन्होंने गलती ये की है कि उन्होंने नए जमाने के लिए उसको नया डिसाइफर नहीं किया, नया नाम नहीं दिया, जो एंशियंट टाइम का उनका नाम था वही दिया है। तो लेट अस लुक एट द एंशियंट टाइम नेक्स्ट, द सर, मैप। बिफोर बिफोर वी गो देयर, या चाइना के ऊपर एक कॉन्सेप्ट आप प्लीज समझाइए। भारत का जो कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज ऑलवेज अराउंड, भारत का, पुराने भारत। चाइना का भी क्या कॉन्सेप्ट था सर? चाइना वॉज फ्लैट रेक्टेंगल, Chinese map was गाइस, always flat. The world is flat, rectangle, and their concept of civilization moved out in concentric rectangles. In the middle was the royal domain, next was the princely domain, next was the domain of their vassals. After that came the domain of the allied barbarians, and thereafter was the domain of savages. तो मतलब वो रेक्टेंगल के बाद क्या एज था, आज से नीचे गिर जाएंगे क्या? उनका थॉट प्रोसेस तो क्या था? कॉन्सेप्ट तो वही रहा होगा कि हम तो गिर जाएंगे, जब भी तो देवर नेवर अ सी फेयरिंग नेशन ना। कैन यू इमेजिन? For a long time, the Europeans were also not a seafaring nation. They were scared या that if they went to the edge of the world, they'll fall off. हम्म So much later, by the end of the 15th century, 16th century, they came up from that, and that's how 15th century mein Vasco da Gama and all started sailing. Then 17th century mein they started going up. But before that, when you look at the concept in the Mediterranean region, Greeks and the Romans, world was flat and you would fall off if you went to the edge of the world. तो ये फ्लैट So अर्थ था, चाइनीज आर द ओरिजिनल फ्लैट Mediterranean अर्थ। Sea, या मेडिटेरेनियन सी से निकलना नहीं चाहते थे, निकलते थे तो you'll hug the coast and go. When अच्छा our कोई। sailors were going all the way from peninsular India right through up to the Mediterranean Sea and doing all the trading, and right up to Japan from the other side along the Pacific, right up to Japan and doing all the trading. So that's the difference. So अभी वो मिडिल किंगडम नाम क्यों बोलते हैं अपने आप को, मैं समझाता हूँ नेक्स्ट। Now you see, this is the heartland, and this was the area of their known world जो मैंने आपको अब ये वायलेट डॉटेड लाइंस में दिया। दिस इज देयर उसको इतना ही एरिया ऑफ पता द था। नोन। इससे ज्यादा उनको पता नहीं था, क्योंकि यहीं से आते थे लोग,
तो इतना तकरीबन है। एंड रफली जो रेड है वाज द हान हार्टलैंड। सो दिस वाज, दे वुड टेक इट, दिस इज द मिडल ऑफ द वर्ल्ड, एंड सो दिस इज द वर्ल्ड, वी आर द मिडिल किंगडम। इतना ही आता था उनको। And since they used to be attacked from Mongolia or Tibet, so hence or Xinjiang, so this were the areas they had to control हम्म and dominate. Kunming से भी आ जाते थे, तो these were the areas that had to be controlled or dominated, so that these are the vassal areas that they are looking at. And mandate was, they always looked upon, the people looked upon it that जो भी किंग है, जो भी डायनेस्टी आ गया है, पावरफुल किंग है, he has the mandate to rule the from heaven, which they have now construed to mandate to rule the world, and they अच्छा feel they are the only civilized people, बाकी सब savages. Okay, and this is what is, they have expanded their Tianxia. Tianxia was the middle kingdom, all under the universe. All under the universe is this only, and they wanted to control all this. Their हम्म claims also come from all this. जी साइबेरिया जापान Yeah, करेक्ट साइबेरिया, एग्जैक्टली ये इधर मंचूरिया, ऑल दीज एरियाज, वो इनके क्लेम्स सिक्स थे वॉर्स कि भी यहीं पे बैठता है सर सिक्स वॉर्स जो इनका कॉन्सेप्ट सारे है भी वो भी इसी इसी के में अंदर बैठ है, जाता है इसी जी के अंदर है। ठीक है, हम्म सो हम्म जब भी स्ट्रांग हुए थे, दे वर अ रीजनल पावर। हम्म बट अब क्या प्रॉब्लम आया, वी कैन हाइड दिस स्लाइड और या लीव इट, ऑडियंस देखता रहे, कि भाई वेस्ट और यूएस ने तो बहुत लार्जेस्ट दिया इसको डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिकली, कि ही विल बी अ काउंटर टू द सोवियत यूनियन। ये सोचा नहीं कि व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, कि अगर सोवियत यूनियन टूट गया तो इसका क्या होगा। एक ही प्लान लेके चले थे कि जब काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा तो पीपल विल यर्न फॉर डेमोक्रेसी एंड इट विल ऑटोमेटिकली बिकम डेमोक्रेटिक। अच्छा And 87, 86, 87, 88, there was a lot of push from the US and the West through Hong Kong to for the democratic movement, which is why it came through the students. हम्म Because from 85, the students, whole lot of students used to go to the US to and the West to study. And I'm sure they were brainwashed on democracy, and they came here to push for democracy. And hence, it was in the Beijing, only in Beijing and the university students there who came out on the streets. हम्म It was led, the movement was led by university students. ठीक है, एंड उसको एक इंडिस्पेंसेबल सप्लाई चेन हब बना दिया आपने। अब आप चीख रहे हो डी लिंकिंग, डी रिस्किंग, फ्रेंड शोरिंग, बट पैसे कहाँ है आपको दोबारा किसी और जगह बनाने के लिए। कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो आपने चाइना में डाले थे ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, एंड you trained so many students and brought everything and created the supply chain hub. वो हम्म अलग बात है कि वैल्यू एड एडिशन चाइना का और वॉट एवर लिटिल एक्सपोर्ट्स इंडिया का होता था वो रफली द सेम। देयर वाज नो लोकल वैल्यू एडिशन। वॉट एवर टेक्नोलॉजी केम फ्रॉम आउटसाइड, दे वर जस्ट मेकिंग एज पर आउटसाइड। लाइक हम बोलते हैं ना टीओटी में, डिजाइन मिल गया वो बना दो, ठीक है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, आपको निकलना है, कैसे निकलोगे, किधर जाओगे, who will give you that same range, scope and depth and will be dependable now? हम्म इसने तो शैडो ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए हैं और अपने एलाइज के साथ, और जिनको कोर्स कर सकता है वो शैडो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करना चाहता है। अगर सक्सेसफुल हो गया विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, यू विल हैव टू सिस्टम्स which has cross dependencies, करेक्ट because countries on both sides are uh, members of both institutions. लाइक That अस is where I don't know how people talk of bipolarity of Cold War 2.0. Maybe I'm little unversed. Cold War का मतलब होता है, bipolarity का मतलब one system one side, another system other side, and the two systems don't meet, period.
which was there during the Soviet time. Not here, यार. हाँ. इसमें आप जो ब्रेकआउट बोल रहे हो सर, आपने जो सवाल पूछा है, इनका नॉर्थ ईस्ट का जो गेम है वो तो उसी के चक्कर में है, क्योंकि वहां से ब्रेकआउट कर सकता है वो. ये जो लॉक जैम लगा रखा है पैसिफिक के अंदर, the only place that he can actually break out as an alternative is India's northeast. तो इसका इंटरेस्ट इतना लद्दाख में क्यों है सर? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि I'll come to that. See, अभी और नॉर्थ ईस्ट के थ्रू निकलेगा कैसे? ही नीड्स म्यांमार ना, उसके बगैर तो जा ही नहीं सकता नॉर्थ ईस्ट. ही नीड्स बांग्लादेश आल्सो एज अ फर्म बेस. इधर कंप्लीटली वीकेंड इंडिया, जहां से जो मर्जी करे वो एमओयू But both एमओयू are out साइन of करा his के hands जो मर्जी today. करा लो. Both are out of his hands today. जी. तो कहां से जाएगा? I was करेक्ट. talking more of the Cold War. जी 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 जी. बाइपोलैरिटी कैसे हुआ? क्योंकि he is part of the existing institutions which the US and the West have created. Plus, he has created his own institutions which he leads, which are shadow organizations to these institutions, where a whole lot of countries, including Global North, are part of it. So, in a literal term, bipolarity and Cold War कैसे हुआ? Okay. Now, प्रॉब्लम ये है जो यूएस एंड वेस्ट को हो रहा है कि they are looking at de-risking. I'll come to next when we talk in terms of Bharat, but it's going to take time. ड्रास्टिक एक्शन जैसे रशिया के साथ किया, अकाउंट फ्रीज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. नाउ चैटर ऑन की जो फ्रोजन अकाउंट है विल यूज फॉर रीबिल्डिंग यूक्रेन. जो कुछ भी बोले, चाइना के साथ कर सकता है क्या? दुकान बंद हो जाएगी यूएस और वेस्ट की यार. इवन जापान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान की दुकान बंद हो जाएगी. ये वही चक्कर है, एक दूसरे की दुकान बंद हो जाएगी. करेक्ट. सो हाउ डू यू कॉल इट कोल्ड वॉर और बाइपोलैरिटी when your dependencies are so deep? And this is where comes Bharat, because if you are looking for an alternative, the only country जो आपको उस तरह का रेंज, डेप्थ और स्कोप दे सकता है चीन के जैसे, इज भारत. एंड इट्स अ डेमोक्रेसी. बट the rising Bharat with strategic autonomy, voice of the global south, is anathema for the deep state. पैसे तो अपना ही उनके गेम पास खेल रहे हैं. नहीं, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, अभी बताया ना, जैसे आपको इन्वेस्ट करना है तो पैसे तो डीप स्टेट के पास है ना. नेशंस के पास तो बचे नहीं है, यूएस और वेस्ट के पास. द जी. डीप स्टेट हैज टू इन्वेस्ट, एंड दिस इज एनाथेमा टू द डीप स्टेट. उनका स्ट्रैटेजी वही है कि मैं एक्सप्लॉइट करूं ग्लोबल साउथ को और अपने पैसे बनाऊं. करेक्ट. अब भारत खड़ा है मल्टीपोलैरिटी के लिए, वसुधैव कुटुंबकम एंड सागर, security and growth for all in the region, and he will not permit exploitation of the global south. This is the catch 22 situation being faced by the deep state. Oh, they would always prefer an emasculated Bharat, in the sense center is not strong. There is a hung parliament and coalition, in the sense coalition hai, no party has a majority, and they will always be able to manipulate their way and get their way. बहुत हमारा जो कुछ भी लोग हैं, सब अटेंशन किसके ऊपर है? इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस ऑफ द पीआरसी. You think influence operations of the US West and the deep state in India is any less? I keep It's covering that, sir. much more. चाइना तो बच्चा है. हाँ, they have been infiltrating our system since donkey's years. जी जी जी. Since the time of colonization.
तब से, तभी मेरा तब तो फोकस हमेशा एंटी इंडिपेंडेंट इंडिया, भी, तब तो पीआरसी था भी नहीं ऑन द ड्राइंग बोर्ड। तभी सर हम लोग फोकस जब करते हैं एंटी इंडिया नैरेटिव में, चाइना बहुत कम फीचर होता है उसके अंदर। हाँ वो यस, न्यूज क्लिक क्लिक के लिए वो सब कुछ है, दैट्स करेक्ट, बट द मेन नैरेटिव तो वहां से आता है ना। मेन वहां से है। हम्म, तो कॉशन जी कि भाई डीप स्टेट एंड यूएस टू वीकन यू विल बी वेरी कीन टू इन्वॉल्व यू इन अ वॉर। अगर चाइना इज नॉट बाइटिंग द बुलेट, अभी तो पाकिस्तान उसका कैट्सपॉ है, कुछ ना कुछ इंस्टिगेट करेगा। इसका ध्यान रखना, बिकॉज he doesn't want you to rise. हम्म He wants you to be dependent on him, and then rise. Today you're rising without your dependency on anybody. जी Okay, तो अभी जिस तरह से चल रहा है, एक तो क्लियर है कि क्राउन काउंसिल के यूएस एंटिटीज जो हैं, दे आर कॉलिंग द शॉट्स, नॉट द यूरोपियन एंटिटीज। दैट मीन्स रॉयल फैमिली में कुछ ट्या हो गया है। या तय तो हो चुका है, और वो बराक तो अभी ओबामा भी आ काफी, चुका है। हाँ काफी दिख चुका है। और बाकी रॉयल फैमिलीज डोंट मैटर मच, एक ही मेन था, वहां तो काफी टाइम बोल गए हैं। बट द वे थिंग्स आर बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड, इट लुक्स एज इफ द क्राउन काउंसिल के यूएस एंटिटीज दे आर कॉलिंग द शॉट्स। इफ दे आर हम्म कॉलिंग द शॉट्स, वी गॉट टू बी केयरफुल कि भाई आपके अंदर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहे। करेक्ट। ओके, तो it becomes easier if you get embroiled in war, then it becomes easier for them. हम्म Because once this happens, if this happens, if they succeed, then the US domination for this century is guaranteed. Because अगर आपका वॉर, हालांकि वेदर विद चाइना और विद पाकिस्तान इज अ शॉर्ट वॉर, 15 एक महीने का हो गया, 1.5 महीने का हो गया, बट इट्स गोइंग टू पुश यू बैक इकोनॉमिकली ऑलमोस्ट अबाउट एब्सोल्युटली। 20 years. हम्म And then by that, then you will need them more and more for development. हम्म So your dependency on them goes, so your strategic autonomy goes for a 6. You take your strategic autonomy, then you won't get that much money and you will take that much more time. Either which way, at least for this century, they would have guaranteed the होल्ड। domination of US over the world island. ठीक है, तो this cycle, it appears to have worked for the US in the 20th century, and this is the cycle they want to carry on in the 21st century. फिर से। हम्म कंटिन्यू, जहां भी एम्बर्स खत्म होंगे, कुछ भी होगा, कोई निकल के आ रहा है, दोबारा होगा। 20-30 साल के बाद फिर कहीं ना कहीं लड़ाई करवाएंगे ही करवाएंगे, तभी उनका होल्ड रहेगा वहां पे, दैट आई बिकम द नेगोशिएटर एंड कंट्रोलिंग थिंग्स। तो हालांकि उसके लिए तो उसका सबसे, ट्रस्ट वैल्यू तो बिल्कुल जीरो हो गया है, बट एंड में आप सबको पैसे चाहिए होंगे क्राउन काउंसिल से। जी, तो तो उसके लिए सर ये अब जो चट्टापट्टा है इसका पाकिस्तान, या तो अभी ये बहुत यूज में आ रहा इसमें है। क्या हो रहा है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि while he is doing what the Americans are saying, a little realizing that he himself is being broken apart. He himself is being broken apart. खैबर पख्तूनख्वा तो वर्चुअली इज गॉन। इसका डाउट ही नहीं था मेरे को जब 2000, आई वाज इन सर्विस, जब 2015 में ज़रबे अज़्ब किया था इसने। हम्म कैन यू बिलीव इट, विद F-16s, अटैक हेलीकॉप्टर्स, हेवी आर्टिलरी, पाउंडेड दैट होल एरिया। मतलब उसके फोटोज तुम देखो शहरों के,
it resembles the war-torn areas of Afghanistan or Iraq or Syria or now Gaza. सारे टूटे बिल्डिंग, छत वत कुछ नहीं, एंड गांव के भी ये हाल थे. Virtually close to 2 million people who used to reside there became internally Yeah. displaced people. No Hmm. wonder those people are so angry against them. And everybody turned against them. अब खैबर पख्तूनख्वा तो गया उसके हाथ से. बलूचिस्तान इज अप फॉर ग्रैब्स. कहाँ जाता है, दे नो कि बलूचिस्तान इज जवातर में ऑल्सो. तो ग्वादर में तो जवातर खो में गया. या ग्वादर में तो अभी ओपन अटैक हो गया. अभी शोज इन्हें छोटा मोटा, मतलब एक आईडी एक्सप्लोड कर दिया या कार लेडन विद एक्सप्लोजिव्स मार दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. But the kind of attack, if you look at the approach to the place where they attacked, the Gwadar Port Authority, and it's a tongue which comes out, and then there is a landmass here, thick colony, thick uh, people living there. Then there is a tongue which juts out, and then there is a rock formation like this. There हम्म, are shipping bays out here. Next, adjacent to the right, as you're facing it from Gwadar, is the CPEC port, and to the right corner is PNS Hamza naval, Pak ka naval base. वाह. Pak ka naval base है PNS Hamza. उसके next is the Gwadar port, and on the other side of the Gwadar port is the fishing के berth वगैरह हैं, the fishing and the उनके सारे इलाके. To come through that complete heavily populated area, all through that road also which is connecting, and come and hit with such force and such weaponry at the port authority, which is next to the CPEC port authority headquarters. Next to it is all ISI and military intelligence headquarters. Everything which was targeted and attacked shows a lot of local support. मेरे को ये बताओ सर, ये जो अटैक हुआ है, ग्वादर तो चाइनीज का है सर. ग्वादर ग्वादर वो इज अ तो चाइनीज चाइनीज को पोर्ट तो ना. अटैक कब से करे जा रहे हैं. एक दूसरा तो चीज, चाइनीज. हाँ. जो ग्वादर की लिमिट्स हैं सर, बाउंड्री है, दैट इज मैन्ड बाय चाइनीज सर. No, only the port area, सो बट दे हैव हिट not द the पोर्ट ना. entire Gwadar city. दे हैव हिट द पोर्ट ना सर. द पोर्ट सिटी Correct. जो वो नहीं नहीं, जहां पे अथॉरिटी बैठता है इनका ना, उसके पीछे उनका पोर्ट है. द पोर्ट एरिया इज enclosed and by a wall and manned by the Chinese. मतलब दे वर Near राइट where देयर. the port authority sits, the CPEC port authority is manned by Pakistanis, and adjacent to it is your Pak ISI and military intelligence and other headquarters of the Pakis. Behind that, and then between the two, the Gwadar port, which the Chinese have made, and the PNS Hamza, is a huge oil farm. Originally made for the PNS Hamza, now it has become bigger because the Chinese ships can also come there and take victuals. And that is told that it has been hit. But I haven't seen those oil flames, but people claim in the chatter that it is hit. Okay. So, but coming back to this, like I said, the Americans will keep doing this till better sense prevails on the people of the world island, that not to get carried away about what the Americans are doing. It's something like the Westphalian moment, because till the Treaty of Westphalia बहुत लड़ाइयाँ होती थी यूरोप में. Not that it stopped, हुआ था, but at that time they decided that why should we fight so much, and you had your Treaty of Westphalia, more of course to control the Pope's powers over making kings and dethroning kings. More to that, and also that instead of frontiers they started firming in their borders, कि लड़ाइयाँ ना हो. हमारे लिए क्या है, we as people, as भारतीय,
हमने ये तय करना है दैट वी मस्ट ऑलवेज हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंटर दैट वर्क्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत। ये हमारे हाथ में और किसी के हाथ में नहीं, बहकावे में नहीं आना। दूसरा जिसका मैं बार बार बोलता हूं, उनको आपकी जरूरत है, आपको भी उनकी जरूरत है। हम्म। You need infusion of funds for your development. So, you need to do your net assessment very carefully, हर सेक्टर के लिए। जो भी नेगोशिएशंस आपने क्राउन काउंसिल के साथ करनी है, खुल के नहीं बतानी है। It has to be done quietly, whether you call it track 2, track 3, track 7, track 27. It cannot be in the open. जी। Because आपको नीचे गिराने के लिए बतेरे लोग खड़े, और खुले में जैसी आएगा आप जानते हैं क्या होता है। और जब वो नेगोशिएशंस के लिए जाते हो या नेट असेसमेंट करते हो, यू हैव टू टेक द ग्लोबल साउथ विद यू। सो ऑब्वियसली। इमेजिन द लेवल ऑफ एब्सोल्युटली सीक्रेसी करेक्ट। एंड अदर थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू। सुपर पॉइंट। एग्रीमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट। एग्रीमेंट जो करना है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होना है, परमानेंट नहीं। और उस एग्रीमेंट के लिए नेट असेसमेंट और ग्लोबल साउथ के साथ मिलके यू हैव टू वर्क आउट क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और रेड लाइंस क्या है, करेक्ट जिसके बेसिस पे सबके लिए कोर बेसिक और हेजिंग ट्रीटी आ जाना चाहिए, स्ट्रेटजीज आ करेक्ट जाना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Aim has to be, in this first round, get a seat on the round table. हम्म। By the time you come to the second round of negotiations, get a seat on the committee where you start. Round table mein you control executions, committee mein you start controlling the policies, major बाइल्डबर्ग एंड policies. दिस दैट एंड ये वो के अंदर। And by the time you come to the third round, you should be trying to see whom all you can put yours in the crown council. वही है सर, वो बाइल्डबर्ग और And ये सब चीजों के अंदर आपका प्रेजेंस होनी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्टार्ट डूइंग start दिस। only जब वहां पे रहोगे, you will start dictating terms to your liking. And once you get third round के बाद, then you got to see how to orchestrate the crown council for yours and the global south's benefit. That has to be the way you have to go. और ये अभी आपको एक strategic window मिला हुआ है। It is not the copy of the Chinese got it all wrong. I would say CPC and Xi Jinping got it all wrong that 2008 was the strategic window. Now, today, for you, geoeconomically, geopolitically, geostrategically, everybody is looking up to you. At that time, everybody was not looking up to the Chinese, 2008, 2009. This is the time when everybody is looking up to you. Whether it be global north, they want FTA with you. You are the voice of the and strength of the global south. The crown council and everybody who has the money wants to invest in you. This is the strategic window that you have. यहां सही से आपने डिसीजन लेना, निर्णय लेने में चूक गए, then you can imagine what will happen. And the way to push the Chinese away is to make sure you have a very effective and a strong deployment along the border and a strong internal security architecture. एब्सोल्युटली। So it pushes him towards the eastern seaboard. Pak हम्म। today is riffraff, you can handle it. उतना ज्यादा आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा नहीं। वो वैसे ही डरा हुआ है, द वे इन विच एमवी रुएन को हमने जाके बचाया था। 2600 नॉटिकल माइल्स अवे चाइना भी हिल गया होगा। उससे तो बहुत लोग डरे हुए हैं सर, बहुत लोग डरे हुए हैं उससे। The manner in which air and the navy marcos getting deployed and the way you went सलूट। about it, classic। अरे हिल गया होगा सारा कि यार ये क्या दिखा दिया आप, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये क्या दिखा दिया आप। और डर गए होंगे लोग कि यार
एंड ऑब्वियसली वो 35 पकड़े गए, उनको तो आप इंडिया ला के ट्राई करने वाले हो। 40 ऑफ देम आई थिंक, एंड दे आर बीइंग ब्रॉट टू इंडिया। आपके लॉज वगैरह चेंज हो गए, सो दे गोइंग टू बी ट्राइड इन इंडिया। तो यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑन द सोमालीज ऑल्सो। पहले तो आप, आपके पास वो लॉ नहीं था, तो आप दूसरे देश को दे रहे थे, अभी बोले थैंक यू, इधर आ जाओ। नहीं, 2600 वापस कर नॉट देते थे, वी यूज्ड टू लीव देम। पहले तो छोड़ भी देते थे, वापस सोमालिया जाओ। छोटे बोट में डाल के छोड़ देते थे कि कहाँ ले या जाओ, अब तो यहाँ ला रहे हो। और वो क्लियर मैसेजिंग हो गया, यू विल कम फॉर ट्रायल्स टू इंडिया। करेक्ट। और ठुकाई यहाँ 2600 होगी। नॉटिकल माइल्स इज, आप अंदाजा लगा लो कितना दूर गए थे आप। एब्सोल्युटली। एंड दिस इज अ शिप, अ यूरोपियन शिप, बल्गेरियन फ्लैग। एंड इतना सारा उनका एडन टास्क फोर्स वगैरह है, घंटा कर लिया कुछ यूएस और वगैरह ने, क्या किया? जीरो। ये दिखा दर्शाता है कैपेबिलिटी कि आपके पास क्या है। तो अगर ऊपर आप स्ट्रांग हो, नेवी आपने दिखाई दिया है कि इंडियन ओशन भाई साहब, आई एम रेडी, सो देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ सुदृढ़, सक्षम, समृद्ध एंड संरक्षक भारत। ये मौका चूकना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस is going to dictate to you राम राज्य मॉडिफाइड फॉर प्रेजेंट डे टाइम्स आपका आ सकता है कि नहीं। ओके, ये बहुत ही अहम है। सो आपका बीट जो अभी यहां से निकल के आ रहा है ना, द स्ट्रेंथ दैट यू आर शोइंग, योर मैरिटाइम प्रोवेस goes from the Indian Ocean and reverberates right up to the Mediterranean Sea. एक लोगों के अंदर जो who want to break something there in the maritime domain, एक डर सा आ जाता है कि यार ये एक देश है जिसने अपनी काबिलियत दिखा दी। फौज तो आपकी ऑलरेडी है, तो यू हैव एन एयर लैंड बैटल एंड यू हैव एन एयर सी बैटल, एंड यू हैव गिवन द exhibited the prowess in both places. इन सो आपने बोला है कि ये जो इलाका है यहाँ का राजा मैं हूं, और इसको सही बचाने के लिए मेरे पास काबिलियत है, और काबिलियत को आपने दर्शा दिया। व्हाई डू यू थिंक चीन हिला हुआ और इतना चीपों कर रहा है? इसीलिए उसने काबिलियत नहीं दिखाई ना अभी तक। यूएस ने जो काबिलियत दिखाई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थी, उसके बाद क्या काबिलियत दिखाई? आज के तारीख में कोई काबिलियत दिखाई है? जिनके साथ किए थे वो तो गुजर गए यार। हमने 71 में दिखाई थी, अब की बार आपने और दिखा दिया है कि है हमने काबिलियत, हम में हिम्मत है, और हम कर सकते हैं, और करके दिखा रहे हो आप। और इसको अगर कंटिन्यू करना है तो यू हैव टू वोट इंटेलिजेंटली, यू हैव टू बी रेजिलियंट, क्योंकि बहुत लफड़ेबाज आएंगे आपके अंदर कुछ ना कुछ करने के लिए। यू हैव टू बी रेजिलियंट, फेस द चैलेंज, एंड यू विल एमर्ज विक्टोरियस। इसके लिए एब्सोल्युटली। मन की स्थिरता, don't get carried away by passion. If I'm saying all this, I'm not saying out of hatred for either China or US. No. I'm यस। just telling that these are the strategies they are following. To be forewarned is to be forearmed. उस वो देश है, उसने अपनी पॉलिसी बनाई है यार, उसको बनाने दो। आप समझो कि पॉलिसी क्या है, उसका तोड़ क्या है, ताकि आपका जो पॉलिसी है वो आप कायम रखो। किसी देश के साथ आपको इस चीज के लिए इस तरह का पॉलिसी है, इस यू डोंट नीड टू गेट वायलेंट, और यू डोंट नीड टू कर्स देम। हम्म। व्हाट हैपेंड टू द टर्किश मिनिस्टर व्हेन ही स्टार्टेड कर्सिंग इजराइल? केस देखा आपने उनके पार्लियामेंट में?
He started calling Turkey or Israel all the names. Then he called on God to curse Israel. और वो कहावत है कि अगर आप इस तरह के बुलाते हो तो बी रेडी कि वो कर्ज आपके ऊपर भी आ सकता है। बेचारा बड़ी है। उसी वक्त मैसिव हार्ट अटैक एंड ही डाइड। राइट जस्ट देयर यार। फेल Shit. right there. He just fell from the lectern after he had called upon the gods to curse Israel. He just fell and died. अब उसका मतलब ये नहीं है कि गॉड ने कर्स कर दिया, वो ये होता है कि ही मस्ट हैव बीन अ हार्ट पेशेंट, एंड व्हेन यू हम्म। बिकम एंग्री एंड ज्यादा करते हो बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ गया, हार्ट पेशेंट, एनीथिंग कैन हैपन। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, जब बहुत गुस्से में होते हो ना, डिसीजन आपका गलत हो जाए, सोच सही नहीं ले पाओगे। गुस्सा आता है, हाँ मुझे भी आता है, बैठता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, कूल डाउन होता हूँ, देन टेक अ डिसीजन, देन योर डिसीजन विल बी रैशनल। करेक्ट सो सर। बी केयरफुल, ठंडे दिमाग से सोचो, जो भी ये लफड़ेबाज आते हैं उनका तोड़ किस तरह से करना है। आफ्टर ऑल वोट आपका है, एंड जी। इट्स योर चॉइस हाउ यू वोट, whom you think will be good for the nation. एब्सोल्युटली करेक्ट सर, देयर इज नो क्वेश्चन। गाइस, इसी नाम पे जरा वोट दबाने से पहले यहाँ पर लाइक बटन जरूर जरूर दबा दो। ठीक है, वोट तो करना ही करना है, बट यहाँ पर लाइक भी करना है, तो लाइक बटन जरा दबाओ जोर से। हमारे पास करीब करीब 1650 लोग हैं। वी गॉट 764 लाइक्स आई थिंक। इसको आप डबल कर सकते हो मेरे हिसाब से तो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फिर ऑल मैं ऑफ यू फॉर। कहूंगा कि वर्ल्ड वॉर 3 तो बहुत पहले से चला जा रहा है, थमा ही नहीं है। थमा ग्लोबल ही नहीं है। साउथ में पूरी आग लगी हुई है। अभी बस एक क्या, ग्लोबल नॉर्थ में एक जगह आग लगी तो अब वर्ल्ड वॉर 3 बोल रहे हो? जनाब वर्ल्ड वॉर 3 तो कब से लगा हुआ है, पूरे ग्लोबल साउथ में आग लगा हुआ है। कांगो से हम्म। जाके पूछ लो यार, कब से लड़ाई लड़ी है। सलारिया जी को पीवीसी पॉस्टमस तो 60s में मिले थे, अभी भी लड़ाई लगी हुई है, बंद कहाँ हुआ है? थिंक करेक्ट। अबाउट द पीपल, थिंक अबाउट द पीपल हु लिव देयर। 50s 60s से चल रहा है, तब कटांगा होता था जिसके साथ लड़ाई होती थी। 50s 60s में अभी तक चला जा रहा है, खत्म नहीं हुआ है। करेक्ट। लुक एट द तो पीपल ऑफ गाइस, सुदान, बिट दाफूर इन सुदान, सुदान itself, नॉर्थ सुदान, साउथ सुदान, यमेन, इराक, सीरिया, लिबिया। लिबिया के बारे में कोई बात ही नहीं करता, लोगों का क्या हशर हो रहा होगा, बढ़ चुका है। सो it's continuous, and I don't know, can we call it a cold war? बाइपोलैरिटी तो हुआ नहीं है वन अभी ऑफ द तक। बिगेस्ट थिंग्स। हाँ जी। गाइस, एज आई वाज सेइंग, प्लीज जरा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। हमारा कल रात को 175,000 क्रॉस करा है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर लाइकिंग एंड गिविंग द सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट आगे चलता रहेगा तो विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। आपको पता ही है अभी टाइम भारत का है, सो भारत के बारे में हमको समझना है। नैरेटिव जैसे सर ने बताया, फुल पावरफुल एक्शन में आएंगे तो वो चीज हमको समझनी है। एंड वी नीड टू बी यूनाइटेड एंड देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। सो प्लीज 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 स्प्रेड दिस कम्युनिटी। शेयर करिए वीडियोस को। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल जो डिस्क्रिप्शन में है। इनसे डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी, या फिर आप सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स या मेंबरशिप का भी रास्ता ले सकते हैं। सबसे पहले आरपाल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर contribution. Arpal Saab, again, thank you so much. He says, Abrahamis, Abrahamis, clueless about Afsarapini and Utsarapini Yuga cycles. यूएस साइकिल्स, Hmm. वन लाइफ All, कॉन्सेप्ट। Hanji, all problem because one life concept, capital communism combination is not sustainable. सी, प्योर कैपिटलिज्म, प्योर कम्युनिज्म इज नॉट सस्टेनेबल, बट even if you go down the you need to go down the capitalist way so that you can have money for welfare for the economically weaker section. So you can call it capitalism with socialist characteristics. Correct.
बाय द वे सर, कल मैंने अपने शो में ना बोला था कि देखो अभी बीएलए वाले ठोकेंगे आगे इनको पकड़ के। मैंने बोला था 48 आवर्स 72 आवर्स के बीच में कुछ होगा। आई वाज पिकिंग अप सम यू नो स्टफ। और हो गया। 24 आवर्स में ठोक दिया आगे उन्होंने। अब दे आई हैड वाज अ देयर लिटिल। दे हैड देयर पुलवामा मूवमेंट इन डीआई के। नहीं सर, मैंने ये 3 बारी से देखा है सर, व्हेनेवर देयर हैज बीन अ मैसिव अटैक फ्रॉम द टीटीपी, मैसिव अटैक, मतलब छोटे-मोटे ठीक है, दे डोंट कोऑर्डिनेट, बट व्हेन दैट्स अ बिग वन, इट हैपेंड विद चित्राल, या इट हैपेंड इन वहां पर एक वजीरिस्तान में एक जगह पे बहुत जोर से ठोका था, उसके बाद मच में हुआ। तो एवरी टाइम देयर इज समथिंग हैपेंस इन द नॉर्थ एंड साउथ, दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। सो आई हैव काइंड ऑफ सीन दिस, एंड ये ट्रेंड लाइंस ही है इसके अंदर। सो इट टेक्स बिटवीन 2 to 4 days व्हेन द हिट कम्स, एंड इट्स अ मैसिव हिट। अभी तो आई इतना मैसिव है, 9 पोस्ट पे तो अफगानिस्तान का झंडा फहरा दिया अब तो यार। ठीक है, तो मैं तो कल सवाल पूछा था, आज भी मैं पूछूंगा, ये वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि पाकिस्तान का अभी मैप तक चेंज हो तो गया? अभी तक तो गए नहीं है, अब देखते हैं जाते हैं कोई कि नहीं, भरोसा क्यों जाएंगे नहीं। यार। वो बंदे तो भाग गए पाकिस्तानी। करेक्ट, भाग गए या सरेंडरिस्तान कर लिया उन्होंने। सो E, thank you so much for becoming a member. Sir, world wars are Eurasian wars for domination. True. वो एक हिंदी में कहावत है ना, दो की लड़ाई तीसरे की भलाई। वो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 आपस में लड़े थे फॉर डोमिनेशन, जीत के कौन गया? यूएसए। उनका क्या हुआ? Mr. Gamer says, in the quest, thank you so much, firstly. In the quest to beat USA, China has become the first copy of USA like their products. US and China are both happy smelling their flatulence in their bubble. Unfortunately, both bubbles are leaking and spreading the smell. You know, you've used a word like flatulence, so it sounds very nice, but yeah, you're right, actually. नहीं, चाइनीज आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन्स। Slightly, yes, sir. Slightly different from the Americans. And yes, see, the Chinese, हम बोलते रहते हैं चाइना ये करता है, is America any different? They do it in a little more sophisticated way. Uh, Okay, so they are the sophisticated dons, and Chinese is like the local ruffian. थोड़े थोड़े हाँ क्रूड है। अमेरिकन वाला आएगा एक नाइस अच्छा सा सूट हाँ, शूट टाई पहन के वाई आएगा लेके, एकदम, जैसे मैं लाइक कहता हूँ ना, प्रॉपर। यूक्रेन में लड़ाई छिड़ गई है। यूक्रेन, वेस्ट यूक्रेन was the bread basket of Europe. 30% of the agricultural land has been bought off by three MNCs of the US. The rebuilding has been given to ब्लैक BlackRock. रॉक वाज By चेंगडू। since they control the media. No, Chengdu has not historically been in the heartland. Kabhi aata hai when they have to expand. Some portions of Sichuan was there. Chongqing tak tha unka. Chengdu kabhi kabhi aata tha. When they used to go towards Gansu, because they needed Gansu, like I had told you last time, वहाँ से passes मिलते थे to come into Tibet and Xinjiang. So Gansu area, that's why you'll find heartland है और फिर ऐसे टंग निकल के आता है ऊपर ऐसे. That tongue area was necessary. Primarily from Sichuan Changdu area, you could cut across to Tibet because of the Salween, Mekong, Yangtze, and all these rivers coming. There were multiple mountain ranges which were watersheds that you had to cross. So in those days, very difficult unless you have a pass. And the passes used to come from there, and hence whenever that strong kingdoms came like Tang, Song, they always had that tongue under their control, and that is when Chengdu used to come. So Chengdu has been their frontier area. Uske north में एक Duhuang, I think, is the area where they had made a barrage sort of a thing almost about 1500 2000 years ago to control the waters of the Yangtze from flooding and to make it. तो पुराना सा वहाँ पे बना के रखा हुआ है. That used to be a frontier area. वो the raids used to come of the Mongols from that direction, north से, तो बहुत डरते थे. जेबी जेपी साहब, थैंक यू सो मच। पार्था, थैंक यू। ही सेज
Is there a connection between dropping tax on imported EVs with the recent JV between Chinese MG and JSW? Are more JVs expected going ahead? No, that JV is more for Kia, the MG motors. This has got Yeah. nothing to do with EVs. सर ईवी का कनेक्शन है उसके अंदर द मेन थिंग इज कि साहब यू द कंट्रोल इन इंडिया नीड्स टू बी 51%. Yeah. So any No, JV no. that you I'm enter saying to, the JV चाइनीज का जो कंपनी है SAIC समथिंग along with Jindal BYD and MG दोनों का है सर. is for MG Motors. Hmm. And now you have said BYD also you will have 50% and everything to come sourced from India and all these from Yeah, India. yeah, yeah. So let's see. I personally I don't see much future for EV. EV अभी flavor of the season है because the back end of EV is very expensive. Charging very environmentally degrading. Charging the EV requires a hell of a lot of electrical grid that you need. कहाँ से लेके आओगे? Again, you will need more of your coal and gas and everything. And the Hmm. recycling of your EVs again is environmentally degrading. So the EV is Dangerous. only okay when it is running. So one is looking at hydrogen coming in a big way, and Toyota claims that they have made a hydrogen engine which doesn't work on fuel cell. Fuel cell का अलग प्रॉब्लम है. हाइड्रोजन को बहुत कंप्रेस करके रखते हैं, एक्सीडेंट होता है तो आग लग जाता है. सेम इज द केस विद ईवी. इफ टू ईवीज कोलाइड इट बर्न्स. एंड द नॉर्मल जो आपका फायर टेंडर है उससे रुकता नहीं है. इट रिक्वायर्स स्पेशल केमिकल्स फॉर कर्बिंग Foam, दैट फायर. नॉर्मल foam, फायर foam. टेंडर पानी से नहीं रुकता. Hmm. उसका भी फ्यूल सेल का भी ये प्रॉब्लम है. सो व्हाट द टोयोटा हैज डन, दे अनवेल्ड द इंजन बट डिटेल्स नहीं बताया. फ्यूल इज वाटर and right next to the combustion chamber is where they do the electrolysis. Or electrolysis, hydrogen and oxygen gets into your combustion chamber and it burns. That's how it does. So it is इसका एक safe. कैच. It will not burn. But what is the type of water? Will it lead Hmm. to water shortage? Extensive use of water? How are you going to use the water? Can you use recycled water? What type of properties you need in that water? How are you generating the amount of power that you will need to do the electrolysis needs enormous amount of power. So what kind of batteries, वो details अभी तक निकले नहीं हैं. They have just unveiled the engine. Once they unveil the car, then we will get to. If it is इसका successful, then it's the death knell for EV. If it is successful, then it's a death knell for EV. इसका एक कैच है. They have to deposit $500 million before availing the tax benefit. So that's I didn't know that. Thank you. वो वैसे ही आपका AM टैक्स कवर हो गया. average middle class gamer. Thank you so much. He says, Rajiv sir pains me, but I hesitate in calling us independent. Most of our economy is service based, especially IT. I think it'll take at least a decade to call ourselves independent. Your take on this? Absolutely. That's what I'm saying. No? You need that money investment for your development to bring up your manufacturing also. So you got to maintain a balance between your services, your manufacturing, and your agriculture, plus your export and your internal consumption. That is the type you want, and you want So, more money investments coming in for your infrastructure. अभी तो infrastructure में भी काफी काम करना है. So yes, it will take. You're rising. So certain areas you're doing, manufacturing also it's coming up, but much more needs to be done. उसके लिए पैसा चाहिए. That's why I was saying net assessment करो, बात करो. You have to negotiate. Soham Saab, thank you so much. Sir, recently we heard comments on our laws and Congress hearing on Pakistani elections. Why does US talk about things beyond their jurisdiction? Are we still their slaves? US का फितरत है यार. करता है, करने दो, सानू की है. Aha, Does it Sanu affect ki. us? Yeah, does it affect us? Let him have heart attacks here. You carry on doing what is right, what you think is right for your country. You carry on doing it.
That's He's wonderful. affected. He's affected. Yeah. Luciul Bano, Tuchiul Begumji, thank you so much. Ram Ram General sir, your wisdom is amazing. Please tell us about future network states with no boundaries. Westphalia nation state model is ending in 2030. बानो बेगम जी, एक मैंने पेपर लिखा था, यूएसआई में पब्लिश हुआ था तो 2018 में, द फ्यूचर ऑफ नेशन स्टेट्स इन द 21st सेंचुरी। जैसे जैसे ये डिपेंडेंसीज वगैरह बढ़ते जाते हैं ना, the smaller nations get suppressed by the bigger and stronger nations in Hmm. negotiations. That is why most of them prefer bilateral and they don't prefer to come through multilateral. That's where ASEAN has failed, that's where EU has failed big time. So the future ahead said is a confederation of nations which are having the cohesion will come if those confederation of nations have similar civilizational connect, जैसे हमारा साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, you have similar civilizational connect, but then no single nation there should be dealing with any other big economic power. Hmm. It has to come through the confederation, whatever you have, and then from there you work for the benefit of all together. That is how it will come. I think the Schengen visa and all that which EU tried to do was towards that, but it came a bit too early. Oh, people, लोग इतने जल्दी accept नहीं करेंगे. You see, you moved from a family to a clan, then groups of clan joined to become tribe, then you became principalities stroke city states, Hmm. then you went to become empires, kingdoms. At every stage you have sacrificed your certain portion of your sovereignty for the larger good of the people. जब खानदान एक्सटेंडेड खानदान था, आपस में आपने खानदान के बेनिफिट के लिए किया, उस क्लैन के बेनिफिट के लिए किया, Correct. इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं किया। फिर Hmm. जब इस तरह से जो एक ही इलाके के क्लैंस थे इकट्ठे होके ट्राइब बने, तो फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द ट्राइब दे सैक्रिफाइस्ड इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लैन. You That's worked how it for is. the Hmm. good of the tribe. Larger good. So it takes time, it takes millennia for these things to say. I would subscribe कि by 2030 तक खत्म हो जाएगा. I don't know. It takes many millennia for these to evolve. So I'm talking of this evolution. I'm not talking it happening overnight. इतने Sir. जल्दी होएगा नहीं. Sir. और जिसके पास अपने देश में ताकत है ना, वो इतने जल्दी अपना ताकत खोना नहीं चाहेगा. Hmm. That is Most how important point. ASEAN that is how ASEAN has failed and that is how EU has failed. Correct. आपके पैरेलल पावर ट्रैक्स हो गए ना. You had EU parliament and you had your own parliament. You had elections separately for EU parliament, whereas you could have nominated people from your parliament into the EU parliament. You created another parliament, उसका अलग इलेक्शन होता है. वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जवाबदार होगा? So it these I have just given it a thought and written a paper. Uh, Many more people will think about it, and maybe towards the end of the 21st century, things start evolving as to how. I have my views on the type of democracy we have, whether it will survive your 21st century. So I'm not saying 21st century mein hoga. I'm talking of can it survive? How will it evolve? Where will it go in the next century? Those are my thoughts. Sir. Cyberpunk, thank you so much. Sir जी, can you turn on likes on Super Chat? Sir, I will try and do that. I don't know. मैं अभी देखा है मैंने ये भी. Let me just, आपने बताया तो मैंने देखा. Let me figure it out. I'll try and switch it on. Thought Provocator साहब, thank you so much. He says, after Swachh Bharat, time for Sakt Bharat Abhiyan. No I would questions. say सुदृढ़, सक्षम, समृद्ध, संरक्षक भारत, उसका अभियान शुरू करो. जी.
War in Global South, Mitul ji, thank you so much. He says war in Global South supplies बिल्कुल, cheap labor to the North. बिल्कुल सही पकड़े हैं। सब भाग के जाते हैं। SS Rana ji, thank you so much. He says, thanks for the great insight, General Ryan. Unrelated, on social media, it appears that regular Muslims seem to hate Hindus, BJP. Disheartening. No, not really. Not No, all I of don't them. think so. Not all of them. Especially not the ladies. Yeah, that's true. JP Saab, once again, thank you. But having said that, I will just say something. Normally, I don't comment on these issues. देखिए, a lot of stuff is which is happening आपके आसपास जो चीजें हो रही है ना, these are also instigated to create social disharmony, to kind of create a crack within you, which could be exploited. तो जो चीजें पिछले 5-10 साल में नहीं हुई हैं, suddenly वो you हो will see रही them है। happening right now. So that's expect this, right? It's sad, but it's the reality. जेपी साहब, थैंक यू सो मच। एक जनरल का चुनाव में वर्ल्ड वॉर 3 बात क्या पीएमए को संदेश था? नहीं, मैं तो कह रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 तो कब से शुरू हो रहा है, चला जा रहा है, खत्म ही नहीं हुआ है। इट इज अनएंडिंग। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर 3 है। ये तो वेस्ट वाले बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 है क्योंकि यूरोप में हिट हुआ है। वो ग्लोबल जी, साउथ में तो पता नहीं कितने दशक बीत गए यार, लड़ाइयाँ चल रही हैं सब तरफ। So it's an unending. You think जनरेशन निकल insurgency गए हैं is सर। also not war? It is war. जनरेशन निकल गई हैं वॉर के अंदर। Yeah. ओनली दर्शन हैज एन इंटरेस्टिंग कमेंट। जनरल सर, सॉरी फॉर सेइंग दिस। व्हाई सॉरी मैन? ही इज सेइंग, बट फॉर बीइंग अ तमिलनाडुइन योर हिंदी इज impeccable. No need It's to my be sorry man. schooling in Bhopal. My schooling in नहीं सर, Bhopal. मैं मेरा नैरेटिव क्या है? व्हाई फाइट ओवर अ लैंग्वेज? लर्न इट, लर्न एवरी Yeah. एवरी लैंग्वेज देयर इज। सिंपल। रोहित जी कहते हैं, आदि राजीव सर प्रणाम। What would be the Indian? What should the Indian civilization do in case of World War III? Then will the deep state attack our critical infrastructure and essential services? Rohit ji, you have your militancies and terrorism going on in Punjab, Northeast, and J&K. You think that was not part of World War III, which I was talking of? I don't accept that World War III is now. I'm saying World War III has been continuing for ages. Some countries overcome that, come out of it. Some others gets stuck in it. Now, what is going on in Pakistan? As you sow, so you reap. They Mm, sowed the wind for India, and they're reaping the whirlwind. whirlwind, absolutely. Now, Thadani, the sorry. the previous question I'll say the apna deep state doesn't want to destroy your critical infrastructure and essential services. No, they don't want to do that. That the Chinese want to do or the Pakistanis want to do, not the deep state. Deep state, like I said, wants an emasculated center, not a Mm, strong center. ठीक है, ऐसा सेंटर जहां पे कोalition है और कोई भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं, उसको वो मैनेज कर लेगा। ठीक है, और जो correct. आगे उसके पैसे को डूबने नहीं देगा और खुद चोरी नहीं करके भाग जाए, उस तरह का बंदा चाहिए। जी, आकाश जी कहते हैं, the upgrade of an area headquarters to be a core headquarters in the central sector is a step in the right direction to securing forward high altitude positions. Your opinion, sir? थडानी जी, वो सेंट्रल सेक्टर में हाई ऑल्टीट्यूड वगैरह में तो वी वर ऑलरेडी देयर। बाय क्रिएटिंग द कोर हेडक्वार्टर यू आर गिविंग इट द टीथ टू फाइट। Mm, There you were giving that time it had the teeth to hold. Now you have given it the feet to take the war into enemy territory. इसीलिए तो वो रो रहा है चाइना कि हर जी, सेक्टर में अभी जैसे पहले बताया था मैंने, आपके पास काबिलियत है कि रोके ही नहीं, तिब्बत के अंदर जाके लिमिटेड ऑफेंसिव आप कर सकते हो। और उसके बेसिस पे अभी आपके पास कम से कम 2 नहीं तो 3 स्ट्राइक कोर अवेलेबल होंगे जो और डीप जा सकते हैं अंदर, जो काबिलियत पहले थी नहीं। अब वो डरा हुआ है, उसके पास इस तरह की काबिलियत नहीं है। पूरे उसके 13 कोर जो है वो ला नहीं सकता है। आपके इलाके में ज़्यादा से 2 या 3 लेके आ सकता है, जो आप ब्लॉक कर दोगे, और आपके पास भी है। तो अब बराबरी का हिस्सा हो गया है कि अगर थोड़े हिस्से में वो ले लेगा तो
एक कोर को वहां पे डाल के उसको सराउंड करके कब्जा कर लूंगा, प्रिजनर्स ऑफ वॉर दे दूंगा एक सेक्टर में, जहां आता है दूसरे सेक्टर में इलाका कब्जा कर लूंगा। नाउ ही डजंट नो व्हाट टू डू ना, हम्म। इसीलिए रो रहा है। जी सेंट्रल सेक्टर में आपने होल्ड के लिए रखा था, अब उसको तो काबिलियत दे दी, जा तेरे को दे दिया लोग, लड़ और आगे भी जा, ये हालत है। जी। Hira Bishji, thank you so much. General sir, you're a real gem. President of El Salvador, Nayib Bukele is that's how it's pronounced. Yeah, targeted Soros. Make a program about South American countries and how the USA ruined them. वाई से ओनली यूएसए? यूएसए एंड सोवियत यूनियन ताली दुहात से बजती है यार। सोवियत यूनियन सर, भी वहां पे घूम रहा था, तो यूएसए जर्मन यूएसए कोई क्यों होगा? जर्मन ने क्या किया? जर्मन्स What is ने the भी Germans किया, done? इतने सारे नाटजीस, आई वोंट से जर्मन, नाटजीस, द लैटिन अमेरिकans gave refuge to so many नाटजीस यार। Yeah, yeah. तो अब भुगतोगे ना यार आप। Argentina is full of it. So अब this एल this is साल्वाडोर ने सोरोस को टारगेट कर दिया, तो व्हाट इज एल साल्वाडोर, क्या खुद कुछ कर लेगा? को फर्क नहीं this पड़ता। one this one is pointed at me, sir. It says USA strongly supported India against on Arunachal Pradesh is China. I am so grateful. Joe Biden ki jai. Why do you keep making an issue of US this, US that? मैंने बोला ना जो Do बाइडन I की need his endorsement that Arunachal Pradesh is mine? and I simple as don't need that. his endorsement. If he where he is Why do wrong, I he have will to be look? Yeah, why do I have need to look for outside support कि भाई Arunachal is mine? Nonsense यार। Did they have they come with anything to support you whenever anything has happened? जब गलवान हुआ exactly था क्या बोले थे वो? talk. Talk. So as he said that Aksai Chin is yours. बोलो ना No, एक्साइचिन हमारा है, पीओके हमारा है, फिर बात करते हैं. हाँ, तो I don't have anything on that. NFA. नहीं नहीं वो मैं मेरे को काफी मिलता है, सो मैं थोड़ा सा अननोन गनमैन. साउथ चाइना सी का वेदर कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अगर चाइना ताइवान पे एक्शन लेना चाहेगा तो? बहुत यार। It's the sea, he has to go amphibious if he's going to mainland China. That's why I keep saying Kinmen Matsu पे तो चला जाएगा, वो तो बगल में ही है, हम्म. वहां पे वेदर का फर्क नहीं पड़ता। बट मेनलैंड चाइना, if he's a fool, he'll go there, because after that there is no CCP, there is no Xi Jinping, and there will be no PLA left. इतने casualties हो जाएंगे उससे। Sir, anti SWLA Sino Wahabi leftist alliance. He says, "Thanks Rajiv ji. Today I came to know Chini are Koop Manduk." Thought provocator. Thank you so much. He says Pakistanis to militants. घर पे नहीं please बाहर जाके खेलो. बाहर जाने से डर रहे हैं क्योंकि कुत्ते खड़े हुए हैं, खा लेंगे उनको सब। शेर खड़ा हुआ है, चबा जाएगा उनको, पता Thought नहीं क्या क्या provocator man. करते हुए। तो अब That's घर the पे comment खेल of रहे हैं, the day. शीशे फूट रहे हैं। That's the comment of the day. बाहर जाके. Anup Rawat ji, generals are spotted champion badge behind you. The pride and respect increase instantaneously. I am CSB 97 badge. Jai Hind, Jai Bharat. IMCS Bhopal 74 batch. Thank you. And that यही is बस. our, we had our course get together wherein we had the 50th anniversary का वो मोमेंटो बना था कॉर्नर में with राजा भोज स्टैचू। Sir, why Obama in UK suddenly? Something fishy. It stinks. या समथिंग ऑफ कोर्स। और मेरे तरफ से बोलता जान दे यार, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो भी अभी आउट हाउस में थोड़े दिन में पहुंच जाएगा। General Saab, Pak Army convoy got attacked now. I truly believe karma hit like a boomerang. Absolutely. जैसी करनी वैसी भरनी, एंड अभी ही हाँ, हैज नो आंसर, किसको ठोके, क्या ठोके, क्या कर। कहाँ पर हमने ठोके? तो बालाकोट भी कर दिया था, सब कुछ कर दिया, उसमें हिम्मत है, एक स्ट्राइक किया, 9 पोस्ट गंवा गया। उसके फौज जो पोस्ट में थी वो भाग गई, आई थिंक 8 10 12 कुछ मरे हैं, बाकी भाग गए। सर सरेंडरिस्तान है ना सर वो. उनका हाँ, तो एसओपी है. बाकी
अपनी छाती चौड़ी करके गालियां निकालो, पहले गोली चलाओ, उसके बाद जब वापस करे तो भाग जाओ। दैट इज देयर एसओपी। तो sir, my friend from China says China is strong. Anybody thinking of dividing us are laughable. We become number one economy soon. Zhao Hui, Let's look look at your original map. This is what you will break into. you a number one economy based on what? You have spoilt your relations with the US and the West, on which you were dependent for your trade, and you have not been able to increase your manage your internal consumption, which Hu Jintao has been after since 2002, and Xi Jinping has also been after it. Yeah, yeah, yeah. If a policy which Xi Jinping was following is not working, it's always better to change tack. Like in the military, they say you never reinforce a failure. You hold there and you reinforce a success or try elsewhere. Your economy has failed based on his policies. There is no Hmm. doubts on that. 10 years down the line, he can't blame anybody else. Has he changed his policies? He is not ready to change his economic policy. Then how do you claim that you will become the number one? No chance. You're still following the same policies that put your economy down. You had the window of opportunity at that time, It's but gone. you didn't strategize and grasp it well, because geoeconomic window you had, geopolitical and geostrategic window you did not have in 2008, 9, 10. You had to grasp the geoeconomic window and simultaneously create the geopolitical and geostrategic atmosphere in your favor, which you didn't do. You only went for the geoeconomic model through coercion. Collapsed. Correct. Fine. So, last two, sir. We need firms like Morgan Stanley, JPMC, BlackRock, and a few hundred Radanis out of India in the next 15 years. True. 15 साल में नहीं होगा यार, 20-30, दैट्स व्हाई आई सेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज। Mhm. फर्स्ट फेज ही Third. देख लो आप, कम से कम 10 साल लगेंगे यार आपके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को सारा करने में। आई एम लुकिंग एट 30 years एंड बियॉन्ड। जल्दबाजी में काम नहीं होता। जल्दबाजी में चाइनीज काम होता है। जैसे मेरा लॉजिक बड़ा सिंपल है, जितनी जल्दी चाइनीज अंदर मॉलडीव के अंदर घुसा है ना, उतनी जल्दी लाफा पड़ेगा और उतनी जल्दी भागेगा वो। नॉर्मली चाइनीज का साइकिल 7 से 8 साल का होता है किसी कंट्री में, ठीक है। मेरे हिसाब से ये 1 1.5 साल का साइकिल होगा इसके अंदर, मॉलडीव के अंदर, इससे ज्यादा नहीं होगा। साइकिल होता है ये पूरा, दे गो इनसाइड, एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, देन एम्प्टी द कंट्री आउट एंड देन दे रन ऑफ। दैट टेक्स 7 years। आई थिंक यू विल सी इट फास्ट। तो सर जो बोल रहे हैं बहुत एकदम पते की बात है ये। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड वी मस्ट आंसर दिस। आई हैव सीन योर शोज ऑन चाइना डिक्लाइनिंग। सर डोंट यू थिंक इंडिया इज होपिंग टू मच on China declining, rather India is rising? Why India is always in the catch-up mode in tech and research? Chitranjan Saha, you have to be very clear, because when I talk of China declining, because there are a lot of people who keep saying no, 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 China is growing. So just to do that, it has got nothing. I'm not hoping for them to decline for my rise. India's rise, yeah, Bharat's rise has got nothing to do with China decline. It is just to put the perspective in place that it is not rising, it is declining. As far as Bharat is rising, yes, it is Bharat rising. Why are you in a catch up mode? For 70 years, you were doing only TOT. R&D was looked down upon and frowned upon. It's Yep. only now that you are making use of your technical institutes and going in for tech research and other things. So obviously, you will do catch up here. Yep. You are 1 to 2 generations behind the West. Like I am, wherever I am able to speak, when people say that he's doing AMCA is a fifth generation. Why are you going for AMCA? You jump to 5 plus Six. or 5 plus plus. Otherwise, you'll always stay a generation behind. So you have to skip a generation of technology and have the courage to bite the bullet. And always remember, when you go for research, if you're researching on 10 things, maybe two, if you're lucky, three will succeed.
Learn to accept that 7 have failed, and within that 7 which have failed, there may be certain parts which you can utilize for improving certain systems and subsystems and the way things function. That you need to have that courage. Hmm. We have always had people looking at the other side of your ledger and seeing only in blue. What is my profit? तो बना बनाया टेक्नोलॉजी आप खरीद के लाके करना चाहते हो कि भाई ये प्रूवन है, बिकॉज यू नीड टू स्पेंड मनी द डे Hmm. यू आर रेडी. All industries, everybody is ready to spend, not just the government. I am also talking of the private industry. Minimum 2 to 3%, ideal is 6%. Minimum 2 to 3% on your R&D, and start accepting failures also. That yes, it may not succeed. Then you will get into this thing of research and moving forward in research. Otherwise, forget it. Hmm. That is true, sir. यार That पूरे is सर्विस absolutely में हम लोग चीख चीख के बोले थे इंटेलिजेंसिया के साथ लो साथ लो. रिटायर होने के बाद अब शुरू हुआ है जो हम हो रहा है. इंटेलिजेंसिया के साथ काम कर रहे चलिए हैं. सर, वही बोलते हैं, देर आए दुरुस्त आए, बट आए तो सही. आए हो. Hmm. That is absolutely true, sir. Last super chat. Thank you so much, Sanju man. Jai Shri Ram from New Zealand. Love your analysis. Thank you, Ji. Sir Ji, as usual, you don't fail to amaze all of us. There is no question. This is a very important discussion, and मैं जरा टॉपिक का टाइटल चेंज करता हूँ, वर्ल्ड वॉर 4. So thank you for inviting us. नहीं, इट इज द वर्ल्ड वॉर 3 which has not ended only. यार चला ही जा Yeah, रहा yeah, है. absolutely, sir. Absolutely. It's It's just it's a not it's a ended. The global south it's has a always been in strife since yeah, the 50s and 60s. It's carrying on. yeah, yeah. And it's the worst part is that कंपैरेटिव प्लेन्स जो होती हैं, जो जिसमें दो जगहों को आप कंपेयर करते हो, दे आर नेवर द सेम. इवन द लास्ट क्वेश्चन अबाउट टेक्नोलॉजी, you need to develop what you need, not what China has. Yeah. I get quite sick and upset when somebody compares this. Oh, China has a rocket that can launch to the Mars. Do I need to launch to the Mars? Is my priority anywhere to launch to the Mars? It's not. So I think circle light chale gaya. So I will basically make the technology that I need, right? So it's about having the good to haves and the great to haves and the must haves. Okay, we need to work on the must haves, we need to work on the good to haves, and then we go on to the great to haves. Okay, show off factors are great, but then we need to understand, do we really need that right now, right? And that is what sir is actually very brightly brought out. And apart from, of course, जो हमने बात करी about global geopolitics, I would like to thank sir in absentia and all of you guys for joining in. वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. रात को सर आ गए, so that we can just say thank you to sir. सॉरी, वो नो लाइट प्रॉब्लम गया सर. यहाँ पे. मैं बोला आपको थैंक यू इन एब्सेंशिया कर दिया, आपने आ गए हो तो अब आपके सामने हाथ जोड़ के थैंक यू कर देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर थैंक जॉइनिंग इन यू, सर, थैंक ऑलवेज. यू. एंड माय वी शैल प्लेजर, सी माय प्लेजर. यू ऑन सैटरडे. जय भारत. ठीक है. जय हिंद, जय भारत. थैंक